कर लेते हैं अपने IPv6। Let's start, right? So the question first comes in the mind, right? Like what you have done last 1 year, right? Like CCNA, CCNP, and CCI label. Okay. So like configure the IP addresses on the router side, configure the IP address on the switch on the management interface, and configure the IP address on the PC. Even firewall as well, right? Wherever you see that. तुमने जहां भी IP address configure करना है, you just configure the IP address in the format of x.x.x.x. So this x.x.x format is representing a IPv4 addresses. In IPv4 addresses, what happening? We have a size of 32-bit, right? So ये जो 32-bit का जो साइज था ना, ये हमें कितना आईपी दे रहा था? ये हमें आईपी जो दे रहा था, वो दे रहा था 4.3 बिलियन. That's this amount of IP address that was given by the IPv4 only. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अमाउंट जो था ये सफिशिएंट नहीं है. टेक एग्जाम्पल, अगर मैं अफगानिस्तान की पॉपुलेशन की बात करो, आई थिंक सो इतना होगा आराम से. इट्स नॉट अ बिग, इजिली इतना हो सकता है, ठीक है. फॉर अ वन स्मॉल Yeah. कंट्री, इफ आई टॉक अबाउट, राइट, एनी नॉट अफगानिस्तान, मे बी टेक एग्जांपल ऑफ द नेपाल, राइट, इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री. इवन दे हैव दिस 4.3 billion of it is, and forget the population right now. Beyond that, they have a more than 4.3 billion of 4.3 billion of PCs, computer and the devices, networking devices. तो अब तुम सोचो एक बात, जब मेरा आईपी एड्रेस आया था 90s 60 70s के टाइम में, दैट आईपी एड्रेस वाज द IPv4, राइट. अब उस समय क्या हुआ था पता है? उस समय जब आईपी को इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो लोगों को लगा नहीं था कि ये जो इंटरनेट है ना, जो कम्युनिकेशन है, माध्यम है, ये इस लेवल पे जाएगा कि हमारे पास आईपी एड्रेस की एग्जॉस्टेड हो जाएगी चीजें. तो ये प्रॉब्लम आई थी 70s के टाइम में. 70s के प्रॉब्लम नहीं आई थी, वो चल रहा था. तो जब मैं अगर तुमको बताऊं ना, इनिशियली जब फर्स्ट कम्युनिकेशन हुआ था ना, दैट वाज द ARPANET प्रोजेक्ट, इफ यू गाइस रिमेंबर दैट, राइट. Yeah. हमने सीसीएनए लेवल पे जब फर्स्ट डे मैंने क्लास दिया था, तो तुमको बताया था कि देयर वाज अ प्रोजेक्ट, राइट. द प्रोजेक्ट नेम इज ARPANET, and ARPA was an agency, right, who introduced this project, and the project was happened between the four different university. I forget the name of the university right now. It was a 4 PC over there. अगर तुमको फर्स्ट डे ऑफ द क्लास याद होगा, मैंने ये एक्सप्लेन किया था, राइट. देयर वाज अ Yeah. Yeah. 4 PC, राइट. सो इनिशियली जो कम्युनिकेशन हुआ था ना इन यूएसए, राइट, इट वाज हैपन लाइक दिस वे. So can you imagine the 4.3 billion and now the 4 IP addresses? So it's a enough one. This addresses was enough. धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली 1970s आया, 1980s आया, ठीक है. 90s में क्या हुआ, इंटरनेट आ गया. इन द मिड ऑफ 1990s डब्ल्यू इंटरनेट आ गया. अब जब इंटरनेट आ गया ना, तो लोग, पीपल आर यूजिंग द इंटरनेट. उसका जब लोगों ने इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया, तो लोगों को आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट हुई. तो उस समय तक हमारे पास ऐसा कोई भी ये नहीं था कि वी डू हैव IPv4 एड्रेसेस एंड वी डू हैव सॉरी, वी डू हैव IPv4 प्राइवेट एंड पब्लिक. ये सेक्शन था ही. ये सेक्शन जो प्राइवेट आईपी एड्रेस का था या पब्लिक आईपी एड्रेस का था या नेट का था, ये था ही नहीं टिल द 90s टाइम, ठीक है. जब आयना को लगा कि भाई लोग बाग है ना आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं फॉर दैट पर्सनल यूज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, राइट. तो उन्होंने क्या किया, जस्ट टू अवॉइड द डिप्लीशन ऑफ द आईपी एड्रेसेस, IPv4 एड्रेसेस, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेसेस टू जस्ट सेव द आईपी, राइट, टू जस्ट सेव द आईपी. उसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया कि लेट्स मेक अ प्राइवेट एंड पब्लिक. तो इससे इससे क्या बेनिफिट हुई, समझो मेरी बात को. इससे बेनिफिट ये हुई, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो स्विच था, अब एक लोकल एरिया नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या क्या होता है. Oh, let's give you my example right now. In my company right now, what happened? I have a 3 printers, right? 3 printers है. उसके बाद हमारे पास अभी ऑलमोस्ट, मैंने स्टूडेंट के लिए ऑलमोस्ट 40 पीसीज खरीद रखे हैं, तो वी हैव अ 40 पीसी ओवर देयर. उसके अलावा आई डू हैव अ 20+ सर्वर, राइट. एंड देन राउटर स्विचेस तो अलग बात हो गई, ठीक है. तो ये अमाउंट है. अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी करूं, तो क्या मैं इसको पब्लिक आईपी एड्रेस दूं या प्राइवेट आईपी एड्रेस दूं? अगर मैं बात करूं बिफोर द प्राइवेट कॉन्सेप्ट एंड बिफोर द पब्लिक कॉन्सेप्ट, वी ओनली हैव आईपी एड्रेसेस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी. वी ओनली हैव आईपी एड्रेस क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. तो अब तो ये खत्म होने पे आ गया था. तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, हमने बोला कि लेट्स मेक अ प्राइवेट एंड पब्लिक. प्राइवेट का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर लोकल एरिया नेटवर्क में अगर इन लोगों को बात करना है, राइट,
दे कैन यूज द प्राइवेट आईपी एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, अगर मुझे सर्वर को एक्सेस करना है, राइट, दैट्स माय सर्वर, आई एम यूजिंग इट, सर्वर को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मेरा ये पीसी हुआ, मैं इस सर्वर को इससे यहाँ से एक्सेस करूंगा यूजिंग द प्राइवेट आईपी एड्रेस, राइट, आराम से एक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे मेरा आईपी सेव हो गया, कैसे, क्योंकि अगर एक कंपनी है, कंपनी ए में मैं अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 192.168.1.1.0/24 रेंज का, तो कंपनी बी में सेम आईपी एड्रेस यूज कर सकता हूँ, राइट, देयर इज नो इश्यू इन दिस वन। सो डुप्लीकेसी तो थी, बट दीज आईपी एड्रेस आर नॉट राउटेबल। राउटेबल मतलब कि ये जो पीसी थे ना, थ्रू द दिस आईपी एड्रेस 192.168.1, इससे इंटरनेट पे कभी पहुंच ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था। अगर इन सब को इंटरनेट पे पहुंचना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। अब हर पीसी को तो हर सर्वर को पब्लिक आईपी दे नहीं सकते, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लाया, नेट का। विद द हेल्प ऑफ नेट, यहाँ पे समझो क्या हुआ, नेट में हमने कॉन्सेप्ट देखा था स्टैटिक नेट, लाइक वन टू वन नेट, डायनेमिक नेट एंड द पैट। So in the net what happened, we have option of the PAT, right, port address translation. With the help of PAT हम क्या कर रहे थे कि मेरा एक राउटर था जो कि आईएसपी से कनेक्टेड था, ठीक है, यू कैन हैव मल्टीपल राउटर एज वेल फॉर द ऑर्डिनेंसिंग। सो एक राउटर था मेरा आईएसपी से कनेक्टेड था। अब इसमें क्या करते थे, हम एक पब्लिक आईपी ले लेते थे। फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिक आईपी ले लिया वंडर वंडर वंडर, तो जितने भी यहाँ पे यूजर्स थे, 40 पीसी हो गए, 20 प्लस सर्वर्स हो गए, और यहाँ पे जो प्रिंट, इफ दे वांट्स टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट साइट, हमें क्या कर देते हैं, हम इसको मैपिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन डू दैट, आई सिंपली डू द मैपिंग ऑफ /24 टू द दिस वन। सो यहाँ से यहाँ मैपिंग हो जाएगा। तो इंटरनेट पे जाने के लिए क्या हो रहा था कि मेरा पैकेट क्या होता था, मैप हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल द पैकेट आता था, एक सोर्स आईपी एड्रेस 192.1.1 था, एंड डेस्टिनेशन 8.8.8 होता। तो जैसे ये राउटर के पास आया पैकेट, राउटर क्या करेगा, इसको ट्रांसलेशन कर देगा इसमें 1.1.1 टू द 8.8.8, तो हमारा सारा इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो जाएगा। ये हमने सॉल्यूशन लाया था, दैट्स कॉल्ड एज इन 1993। और इन द 1993 itself we have introduced the classless concept as well. तो टिल द 1993 हम क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो जस्ट टू सेव द आईपी एड्रेसेस, बट ये इवेंचुअली सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड दैट्स फाइनली इन द 1998 what we have introduced with the ipv6। अब मैं तुमको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है, ipv4 एड्रेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, और अभी भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई सिक्योरिटी का कंसर्न, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था पंगा। जैसे हमारे रिप प्रोटोकॉल में पंगा है तो हम ईआईजीआरपी यूज करते हैं, ईआईजीआरपी में पंगा है तो हम ओएसपी यूज करते हैं। इट्स अ रिकमेंडेशन टू यूज द ओएसपी एनालिसिस प्रोटोकॉल इन द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, बिकॉज इन द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क व्हाट हैपन, वी कैन नॉट, अगर तुम ईआईजीआरपी यूज करोगे तो यू कैन नॉट रन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सो वी हैव सच इश्यूज राइट इन द राउटिंग प्रोटोकॉल। बट यहाँ पे कोई ऐसा इश्यूज नहीं था आईपीवी4 में जो हम आईपीवी6 पे भाग रहे थे। एक ही पंगा था, आईपी की कमी। और आईपी की कमी को दूर करने के लिए हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाए। हमने लाया प्राइवेट, पहले नॉर्मल आईपी एड्रेस होता था, पहले वी डोंट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक, तो हमने लाया प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉन्सेप्ट। प्राइवेट पब्लिक आ गया तो प्राइवेट आईपी एड्रेस राउटेबल नहीं थे, तो उसको राउट करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट लाया नेट का। नेट के थ्रू हमने पैट का कॉन्सेप्ट लाया। पैट के थ्रू क्या हो गया, एक पूरा का पूरा सबनेट, कैन यू इमेजिन दैट, पूरा का पूरा सबनेट एक आईपी को यूज कर रहा है। सो कैन यू इमेजिन दैट, अगर पहले इसको समझो मेरी बात को, एक कंपनी थी, उसको उसमें 500 प्लस यूजर थे, अगर 500 प्लस यूजर को इंटरनेट से कनेक्टिविटी करवानी थी तो 500 प्लस आईपी नीड पड़ रही थी। अब क्या पड़ रही है, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी, अब मुझे सिंगल आईपी की नीड पड़ रही है। हाँ सर, कैन यू हियर मी? Yes, yes, या yes. मैं इंटरनेट गेट फ्लैट नाउ। सो पहले क्या हो रही थी, 500 आईपी की नीड पड़ी थी, अब हमें कितनी आईपी की नीड पड़ी है, अब जस्ट हमें सिंगल आईपी की नीड पड़ी है। सो देयर इज अ रीजंस राइट टू मूव फ्रॉम द आईपीवी4 टू द आईपीवी6, दैट वन वाज द ओनली की डिप्लेशन विद द आईपीवी4 एड्रेसेस। नाउ अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि नैट के कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था, सिंपल से समझो कि नैट जब तुम यूज कर रहे थे ना IPv4 में, पंगा कहाँ आ रहा था कि एक पीसी है, इसकी आईपी एड्रेस 191.168.1 थी, ठीक है, जब ये पैकेट स्विच के पास आता, स्विच क्या करता है, ये पैकेट राउटर को देता था,
अब राउटर हमने क्या कर रखा था, हमने राउटर पे नेट कर रखा था, ठीक है। जब ये आईएसपी को जाता तो कैसे होता, चीजें ऐसी होती। अगर ये पीसी अगर इस पीसी से बात कर रही है 191.1.2 से, ठीक है, तो पैकेट नॉर्मली मेरा ऐसा होता था, सोर्स मेरा 1.1 होता था एंड डिस्टेंस मेरा 1.2 होता था। देयर इज नो इश्यूज राइट, मेरा पैकेट यहाँ से आया, यहाँ पे चला गया, यहाँ से रिटर्न ट्रैफिक चला गया, देयर इज नो इशू। पंगा कहाँ आ रही थी पता है, नेट में। नेट में पंगा ये आती जब ये पैकेट राइट, जब इस बंदे को 1.1 को कम्युनिकेट करना होता था 8.8 से, राइट, जब इस बंदे को इससे कम्युनिकेशन करना होता था, तो पैकेट कहाँ आती थी, पैकेट राउटर के पास है। राउटर ने क्या किया, नेट किया, नेट में क्या होता था, मेरा आईपीस चेंज हो रहे थे। अब मुझे बताओ, ठीक है, अगर मेरे आईपीस चेंज हो गए, ठीक है, पहले मेरा ओरिजिनल एड्रेस ये था, ठीक है, और ये मेरा क्या होगा, चेंजेबल एड्रेस, तो मुझे ये बताओ, ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड एड्रेस, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रिटी नहीं चला गया, या क्यों नहीं चला यार? चला गया। इंटीग्रिटी के कारण क्या हो रहा था, आईपी सेक में हो रहे थे प्रॉब्लम। चीजों को पकड़ो, IPv4 को क्या क्या प्रॉब्लम है आप देखो। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि IPv6 पे जाने के लिए एक ही रीजन था कि IPv4 में कमी थी, राइट। उस कमी को सॉल्व करने के लिए हमने या मैट इंट्रोड्यूस किया। अब मैट को इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पता है, इंटीग्रिटी की। अब बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं कि नैट जो है ना, नैट यूज करना चाहिए जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजन। तो मुझे ये बताओ, क्या नैट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्या? नहीं, ये तो सिर्फ एड्रेस एड्रेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं, दैट्स द क्या ओनली। ये कॉन्फिडेंशियली देता है? नहीं। क्या ये इंटीग्रिटी देता है? नहीं। क्या ये रिलायबिलिटी देता है? नहीं। क्या ये ऑथेंटिकेशन देता है? नहीं। क्या ये किसी मैलवेयर अटैक से बचाता है क्या? नहीं। तो पहला तो ये जो मिथ है ना लोगों के दिमाग में कि नैट जस्ट टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, ये नहीं है। ये क्लियर हो गया होगा, राइट। या चीजों को पकड़ो यहाँ पे, लेट्स कम टू द दिस बुक। तो लेट मी शो यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस अमाउंट में आईपी एड्रेसेस थे 4.3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली IPv4 में। So that's why we are not using nano because we have done with IPv4. So people are moving to the IPv6. अब देखो IPv6 में एड्रेसेस का जो अगर मैं रेंज बताऊँ ना, इट्स अ ह्यूज। इफ यू सी दैट दिस वन, इट्स अ ह्यूज। it's to the power of 128, yeah, या which is 4 5 times more than IPv4. राइट, सो इट्स अ बियॉन्ड दैट वन। मतलब अगर तुम एक एक आईपी एड्रेस किसी एक एक बंदे को भी असाइन कर दोगे ना, तब भी तुम्हारा आईपी एड्रेस कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। If you compare with this one, can you see that the range we have from here to here? या दोनों लाइन चला गया। लाइट चला गया। एक 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 में आ सकता, तो फिर अभी थोड़ा जल्दी कर देना, लाइट बैटरी डाउन होगी लैपटॉप में, right? So we have this range of the IP addresses we have. Now let's come to this point. See, Asa, just make a note of this thing. It's very important. I'll share you this book as well. Okay. Okay. अब देखो अनदर नीड कहाँ पड़ रही है IPv6 की, जहाँ पे तुम्हारे पूरे के पूरे IPv6 यूजर बैठे होंगे, ठीक है, तो वहां पे तुमको IPv6 की नीड पड़ेगी। This is the location of the IPv4 addresses. अगर तुम if you see that the class C we have this range. Can you hear me? Hello. Yeah, sir. I'm saying that in the class C, if you see that we have this range of the IP address in the IPv4. In the class B, we have this range of the IP address in the IPv4. In the class A, we have this range of the IP address in the IPv4. तो सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है ना, सबसे ज्यादा जो आईपी एड्रेस है ना IPv4 में, वो क्लास ए में है। अगर तुम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से अगर तुम आज के डेट में आईपी मांगते हो ना, तो वो तुमको क्लास ए का ही देगा, वो क्लास सी का क्लास बी का लोकेट नहीं करेगा, बिकॉज दे आर डन विद द क्लास बी एंड क्लास सी ऑफ द पब्लिक आईपी एड्रेस। दे आर ओनली हैव अ क्लास सी। अभी रिसेंटली मैंने 3 आईपी लिए हैं, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस, एंड दे जस्ट गेव मी द क्लास ए आईपी एड्रेस, द रेंज ऑफ द 120। So they have done with the class C and class B public. So now they only have a few IP addresses left. But service provider मैंने मुझे ये बोला था कि सर आप IPv6 ले लो, I can give you the free, right? But the IPv4 you need to pay the money.
So this is how the things are going on right now. But आने वाले time में maybe max to max 1 to 2 years, service provider will be say that okay, we are not having the any single IPv4 address. You have to go with the IPv6 now. Okay. NAT के concept मैंने बता दिया था कि why we are going to use the NAT because of the private IP. Yeah. We need to do that. और अभी भी ये जो concept ये IP safe है, that's because of the NAT. मतलब अगर NAT ना होता तो almost IPv4 खत्म. हाँ, NAT नहीं होता तो ऑलमोस्ट IPv4 खत्म. Yeah, exactly. NAT Beside integrity अगर that's why उसका I'm saying ना कि like if you see that कि एक कंपनी है तुमको, ठीक है, एक कंपनी में तुम्हारे पास 500 यूजर है. अब 500 यूजर के लिए तुमको कितने आईपी चाहिए? 500, राइट? या तो 500 तुम आईपीज दे दो, या तो तुम क्या करो, वन पब्लिक आईपी दे दो. तो बेटर है ना कि वन पब्लिक आईपी दे दो. या ठीक है, क्योंकि पहले तो पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले तो सिर्फ आईपी होती थी ना. तो मैं क्या बोलूं, अगर 500 यूजर को तुम आईपी दे दो, आईपी मतलब पब्लिक आईपी, राइट? या तो तुम क्या करो, 500 यूजर को प्राइवेट आईपी दे दो और उसको मैप कर दो किसके साथ, पब्लिक आईपी के साथ. बट यहाँ पे तुम्हारा जब तुम पब्लिक आईपी के साथ मैच करोगे, तुम्हारी एंड टू एंड जो इंटीग्रिटी होगी वो तो खत्म हो गई ना यार. यस. सिंपल सा लॉजिक है. अगर तुमको मेरे से बात करना होगा, अगर मैं इन बिटवीन क्या करूँ, तुम्हारा एक फ्रेंड था जो हैदराबाद में था, मैं उसको बोलूँ कि भाई तुम उसके थ्रू बात करो, तुम्हारी इंटेग्रिटी खत्म हो गई ना. मैं तुमको उसको कुछ बोलूंगा, वो तुमको कुछ और बोलेगा, राइट? मिडिल मैन आ गया बीच में. तो या नैट इज लाइक वर्ड, नैट इज लाइक अ मिडिल मैन. जो भी डेटा यहाँ आ रहा था उसको क्या करता था, मैनिपुलेट करके भेज रहा था. तो इंटीग्रिटी ही खत्म हो जाती थी नैट के कारण. बट हाँ, नैट नैट ने क्या किया, सर्वाइव दे दिया हम लोग को, सर्वाइवल बहुत ज्यादा अच्छे खासे लेवल पे, राइट? अगर तुम इफ यू सी दैट, राइट, क्या क्या प्रॉब्लम थे नैट में, तो दिस इज द वन ऑफ द मेजर इशू ऑफ द नैट, दैट्स हाउ वी हैव आईपी6 इशू, राइट? क्योंकि तुम्हारा का पूरा पूरा इंटीग्रिटी ही चेंज हो जा रहा था. अंडरस्टूड? या लेकिन अभी भी सर IP6 तो यूज हो रहा है मतलब नेट आईपी6 में इज अ तो. डिफरेंट थिंग. आशद, आईपी6 तुम क्यों यूज करते हो? आईपी6 तुम इसलिए यूज करते हो टू जस्ट टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू योर डेटा. Security to the IP header. नॉट आईपी हेडर, योर डेटा, Data, exactly. राइट? तुम अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए तुम ये यूज करते हो आईपी6 प्रोटोकॉल. नैट इज अ डिफरेंट थिंग, सो डोंट कंबाइन द बोथ थिंग्स. नैट कभी तुमको सिक्योरिटी नहीं देता है. अगर नैट सिक्योरिटी नहीं. देता तो तुम आईपी6 यूज नहीं करते, राइट? Yes, yes. So this is how the things was done. So this is the home user. Let's router connected. There's here we have a NAT. Then we have a ISP private RFC, and then again we have a NAT for the public IP addresses. Yeah. Yeah, this is the concept. NAT is not a security. Though most of the people think about the NAT has a, like a thing of they have security. They don't provide any kind of security over there. Yes. The reason, there is a reason behind it. If you see that, the most of the people think that NAT could provide. If you see this line, I think so. This line. So after all, if the NAT really did provide the security, we didn't necessary for our networks. We would not have any issue with the virus, malware, ransomware, or any other problems plugging our devices beside the most of the devices hiding the behind the NAT. NAT सिर्फ तुम्हारा क्या कर रहा है, नेटवर्क को हाइड कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है, और तुम्हारे इंटीग्रिटी को वेस्ट कर रहा है, राइट? Yes. So make sure that this line is a very important. Whoever thinking that NAT is thinking that NAT provide the security, it doesn't provide the security. We don't have IP, so we do have IPv5 as well. So after the IPv4, we do have IPv, but IPv5 क्या होता? It was only came for the stream control protocol. Stream control protocol मतलब what? Audio and video के लिए आया था, right? Multimedia का application के लिए, but now you will not see the IPv5 anywhere. अच्छा IPv5 भी था. हाँ, IPv5. There was IPv5. After the v4, there was IPv5. So IPv5 was only came for the multimedia protocol. Stream Control Message Protocol, SCM. Yeah. Yeah, this was the example that I gave you, the ARPANET one, right? So there was a Ford PC, they were using the 9069 for the IP configuration.
IP. So on that time, there was no requirement of the IPs, right? 4-5 PC they use हो रहा था. But nowadays we have things are different. तो सर IPv6 अभी कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, मतलब Everywhere, वर्ल्ड वाइड? man. In India, if I talk about Geo is completely running with IPv6. अच्छा, इट्स अ सर्विस प्रोवाइडर. Yeah, Comcast, that's a US company. They are running with IPv6. Facebook, they are running with IPv6. British Telecom, they are running with IPv6. Right? Cisco, they are completely running with IPv6. Most of the companies, they are 90% companies are running with IPv6 nowadays. अब तुम बोलोगे कि मुझे IPv6 में ट्रबल सूट नहीं मिल रहा, राइट? So they still have IPv4. They do also have IPv6 as well. They are running the both technology. अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो So your हटा voice देंगे. is breaking. Now can you hear me? Can you hear me now? Hello. Asha, are you there? If your voice is breaking, अभी I can Acha. hear you. Okay, cool. A while ago, it was So disconnected. no issue. So what I'm saying that कि IP V5 के बाद IPv6 आया, और IPv6 में भी प्रॉब्लम क्या हुई थी पता है? IPv6 में प्रॉब्लम ये हुई थी कि लोगों ने अपने अपने राइज दिए थे, अपने अपने लाइक यू नो दे गिव द ओपिनियन एंड दे सेड कि नहीं 128 बिट का नहीं होना चाहिए, 132 बिट का होना चाहिए, 160 बिट का होना चाहिए. दे गिव द डिफरेंट डिफरेंट as like you know opinion as well, but finally the solution comes with the 128 bit only, right? So if you see that in 1994, the ISA chose the SIP but with the 128-bit address. The finally they everyone go with the 128-bit, but the opinion was given by the different organization as well. Go with the 160-bit and go with the 64-bit as well, right? But the eventually the winner was the 128-bit only. So there was a fight right in the 90s time, like कि कितने bits का IPv6 होना चाहिए so that वो खत्म नहीं होगा. So they give the सर different. इसमें तो अभी सबनेटिंग नहीं है ना We IPv6 do में? have a subnetting for this one as well, but लोग अच्छा. use नहीं करते हैं. People are not that much because we have enough one, man. Yeah, that's what I say. It's a Yeah, lot of IP, so why should we we do lot of sub? things we have. Wait, you will see more things now. So another myth लोगों के पास ये IPv6 clearing कि IPv6 is more secure than IPv4. It's a myth. There's no security we have. Either we can have IPv6 less secure than the IPv4. So and IPv6 will replace the IPv4. So these all are the myth we have. That's one. Let me go through that important line. So the first thing, what you have understood, like the reason to move to the IPv6 is only that we don't have a sufficient IPv4 addresses nowadays. So we have moved from 32-bit to the 128-bit addresses. Now we have moved from decimal number to the hex number. The reason that because the complete your IPv6 addresses are the hex format. So the IPv4 addresses, for example, we have a 10.10.10.10.10, right? These is called as what this is the decimal format. We cannot put like this by Yeah. 10 A, B, and 1. We cannot put like this with IP addresses, IPv4 address. We all have a decimal format, right? So we have moved from the decimal to the hex format. How? Because your IPv6 addresses, right? Your IPv6 addresses are the in the hex format to easy to manage, right? To make a more manageable, right? IPv6 addresses are divided into 8 groups. 8 ग्रुप में हमने IPv6 को डिवाइड किया था, जहां की तुमको अगर याद होगा तुम्हारा IPv4 जो एड्रेसेस था वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड था, X, X, X एंड X. यहाँ पे हमने क्या किया, IPv6 को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया था. फॉर एग्जाम्पल, one of the IPv6 address, I mean 2001, the divided by the double colon. We don't have a single colon now. We do have a double colon. I'll call this guy.
right? To make it more manageable. So we divided the So 2000. hexadecimals, I'm coming to the like point. Just give me one. I'll come to it. So 2001 cafe DB8, right? 0 DB8, I can call it. And then I'll call this guys as 0000 A, B, C, D. Then we have a 1, 2, 3, 4. Then we have a 1, 2, 3, 4. Then we have 1, 2, A, B, right? If you see that 3, 4, and 4. Now we have a 128. So we have divided your IPv6 addresses in the 8 format, 8 blocks. अब तुम यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम समझो क्या हो रहा था. This is just a one random IP address. I just wrote it, nothing else. अगर तुम अपना IPv6 IP डेसिमल फॉर्मेट समझो कैसा रहा था. तुम्हारे पास बाइनरी नंबर था, ठीक है. उसके बाद तुम्हारे पास हेक्स नंबर था, राइट. देन वी हैड अ डेसिमल नंबर, right? We had a 000, then we have a 001, then we have a 0010, then we have a 0011, then we have a 0100, then we have a 10101, not 1010, 1000, then we have 01, and then 01, right? Then we have a 0110, then we have a 0111, then we have 1000, right? Then we have a 1001, then we have a 11010, then we have a 1011, then we have a 1100, then we have a 1101, then we have a 11110, then we have a finally 111. So this is the binding number. This is the hex number we have 0. Then we have a 1. Then we have a 2. goes up to 15. Goes up to 9. A, B, C, that's count. Then as, yeah, right. 3. Then we have a 4 over there. Then we have 5. 6. 7. 8. 9. Then we have A. Then we have B. Then we have a C. If you understand this part, your almost IPv6 is done. So the most difficult part of the IPv6 is to understanding the IPv6 addressing mechanism. That's all. E and F. So this is the hex format I have. At the same time, what happened? Okay, I cannot do that copy. Then we have a decimal number. In a decimal, we have a 0. We have a 1. We have a 2. We have 3. We have 4. We have 5. We have 6. We have 7. We have 8. We have a 9. We have a 10. That's my decimal. Can you see that we are not doing the A now? We have 11. We have a 12. We have 13. Like this. We have 40. We have 50 now. So तुम्हारा IPv4 एड्रेसेस जो है ना, जो तुम्हारा IPv4 एड्रेसेस है, वो तुम्हारे है बाइनरी डेसिमल वाले. तो मतलब जब तुम एक IPv4 एड्रेस डिफाइन करते हो, मैं बोलता हूँ कि लेट्स मेक IPv4 राइट नाउ, राइट. तो तुम क्या करते हो? एक बोलते हो कि लेट्स मेक 1 डॉट और मे बी द 10.9.1.8. This is the one of the IP addresses we have.
तो ये सारा का सारा नंबर कहां से उठा तुम्हारे पास? decimal. डेसिमल नंबर से। मेरा हर एक डिजिट जो है ना वो किसका है? डेसिमल का। हर एक डिजिट मेरा किसका है? डेसिमल का। चाहे तुम 10.0.1.8 डाल दो, या तुम 192.160 डाल दो, चाहे तुम ये भी कर सकते हो ना 10.15.1.2 डाल दो, तो ये 15 कहाँ गया? डेसिमल में से, Yeah. राइट? बट ओवर हियर, राइट, ओवर हियर व्हाट हैपेंड, दिस इज ऑल योर डेसिमल नंबर, राइट? दिस इज ऑल अबाउट योर robot हेक्स नंबर। तो तुम्हारा जो ये है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को, कि ये जो 2 है ना, ये 2 मेरा डेसिमल है, और मेरा ये सी जो है ना, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हेक्स। Hexadecimal. क्या ऐसा Yeah. पॉसिबल है क्या कि हम दोनों जगह से नंबर ले लें? No, no. No, right? What we are doing Yeah. that? So all these number that you can see, that all these number is from what? Hex. This number is from the decimal. This number is from the hex we have. So 2 is from hex, then 0 is from hex, 0 from hex, 1 we have x, right? Then I can see we have from the hex as well. A from the hex, F, that's the last number, we have F over there, right? We cannot have a G, and then we have E again from the hex over there. So all the bits that you can see that from here, all the digit value, it's from the hex. You got the point, this point now? Yeah, yeah. Yeah. Now the to make a easy to readable, what happened? We have a single dot over there. Now we have a double dot. Colon. We have a single dot, we have a double dot. That's a representation format of the ipv6. Now यहाँ पे जो तुम्हारा एक बिट है ना, let me do like this way, जो तुम्हारा पर यहाँ पर एक डिजिट है मेरा कंप्लीटली, ये कितने बिट्स को रिप्रेजेंट करता है? ये 8 bits को. 8 बिट्स को। ये भी कितने को करेगा? 8 को। 8. ये भी किसको करेगा? 8 को। ये भी किसको करेगा? 8 को। तो कितने हो गए? 32 बिट। 32. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना इस बंदे की, तो ये बंदा बोल रहा है कि भाई मेरा जो ये है ना, ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा 4 को। ये मेरा किसको करेगा? 4 को। ये किसको करेगा? 4 को। ये किसको करेगा? 4 को। कितने हो गए? 16। 16. 16। This also have a 16. This also have a 16. Right? This also have a 16. 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 into 8 कितना हो गया? 128. 128 बिट। अब मेरा हर वैल्यू यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे मेरा हर वैल्यू, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? डेसिमल को। डी 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 एंड डी। यहाँ पे ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? हेक्स Hex. हेक्स हेक्स एंड हेक्स। ये क्लियर हो गया? Yeah. द डिफरेंस इज क्लियर, राइट? नाउ Yes, yes. अब मुझे बताओ, क्या तुम इतने बड़े आईपीएस को याद कर सकते हो क्या? That was the question that I was going to ask you. राइट, दिस इज द हार्डेबल फॉर्मेट, राइट? इसे नॉर्मली क्या होता है, देखो, आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ कि मैं आईपीवी4 को क्यों पसंद करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इजी टू रीडेबल। Yeah, short form. शॉर्ट फॉर्म में, राइट? सो सेम वे तुम आईपीवी6 को भी तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। How? कैसे? सो वट एवर द थिंग्स दैट यू हैव, राइट, तुम क्या करोगे? ओमिट द कंसेक्यूटिव जीरो। तो जितने भी इस कंसेक्यूटिव जीरो होंगे ना, उसको तुम ओमिट कर दोगे। किसके साथ? या तो सिंगल जीरो के साथ कर दोगे, या तो डबल कोलन के साथ कर दोगे। सेकेंड थिंग इज व्हाट, दो ही रूल है इसके, ओमिट द कॉन्सिक्यूटिव जीरो विद द सिंगल जीरो और द डबल कोलन। नाउ ओमिट द लीडिंग जीरो। अब मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, पहले वाले का एग्जांपल क्या होगा। सो लेट्स टेक एग्जांपल दिस वन। सो इसका एग्जांपल ये होगा कि मान लो कि तुम्हारा 0 0 0 एक है, तो कितने बिट का हो गया? 4 4 4, राइट? 16. 16। तो मेरा एक ये मेरा एक ब्लॉक हो गया, राइट? ये मेरा एक ब्लॉक हो गया।
सो इस एक ब्लॉक को, ब्लॉक नंबर 1 को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? 0 से कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट। And with double colon as well. I'm coming to the point. So if you have a 0 0 0 and if you have again 0 0, कितने ब्लॉक हो गए? ब्लॉक नंबर 1 दो. एंड ब्लॉक नंबर 2। इसको मैं किससे कर सकता हूँ? इसको मैं कर सकता हूँ 0 एंड 0 एज वेल। ये भी क्लियर हो गया। अगर सेम Yeah. वे मैं 0 0 0 0 एंड 0 0, कितने ब्लॉक्स हो गए? 3. एक और 0 डाल देता हूँ, ये 4 हो गए, राइट? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 0 0 0 एज वेल। गॉट इट? Yeah. ठीक है। अब इसको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट? अब मैं क्या चाहता हूँ कि पता है, इसको मैं और सॉर्ट आउट कर दूं। पहले तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंगल जीरो में, राइट? अब मैं चाहता हूँ इसको और सॉर्ट आउट कर दूं। तो इसको सॉर्ट आउट तुम कैसे कर सकते हो? पता है, इस पूरे के पूरे जीरो को, ये पूरे के पूरे ब्लॉक 1 को, ब्लॉक 2 को एंड ब्लॉक 3 को एंड ब्लॉक 4 को, व्हाट यू कैन डू दैट, यू कैन कन्वर्ट इनटू द डबल वन, डबल कॉलम। अच्छा, ये 4 ब्लॉकों को सर. चारों ब्लॉक को इसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा. If it's consecutive, yeah. दैट्स अ कंसेक्यूटिव जीरो। नाउ अच्छा. अब लीडिंग जीरो की बात करते हैं। लीडिंग जीरो में क्या होता है कि मान लो कि मैं, मुझे पहले बताओ कि 0 0 1 0 और 2000 0, इसमें से दोनों में से लीडिंग जीरो कौन से है? Leading zero, I think the last 2100, that's what I think. And the first, ये दोनों 00 भी सो उसका लीडिंग leading. का मतलब क्या होता है? जो लीड कर रहा होता है। इस वर्ड को पकड़ो, लीड। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो लीड होता है ना, लीड जो कर रहा होता है, जो बता रहा होता है, जो डायरेक्शन दे रहा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन दे रहा है? ये बंदा दे रहा है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ है मेरा 0 0 0 1 0। यहाँ से थोड़ी ना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जीरो दिख रहा है क्या तुमको? नहीं, दैट्स ये लीडिंग वन। 21 is the leading one. Leading means what? You have to check from the left to right. To the right. So left to right, left to right. तो इसमें लीडिंग कौन सा होंगे? 0 0 Zero वाले, zero. राइट? तो तुम Yeah. इसको क्या कर सकते हो? लीडिंग जीरो को ओमिट कर सकते हो। कैसे? यू जस्ट पुट द 1 0। अच्छा. क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है, No, because it's not started राइट? with the बिकॉज zero zero. वी हैव अ मीनिंग फॉर दिस वन। क्या तुम IP 0.0 लिखते हो क्या कभी? नहीं. नहीं लिखते हो ना। तो वी डोंट हैव अ मीनिंग फॉर दिस वन, बट वी डू हैव अ मीनिंग फॉर दिस वन। मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ 2.1.0.1, ऐसा तो लिख सकता हूँ, राइट? Yes. तो इसका तो मीनिंग होगा ना इस जीरो का, इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका मीनिंग तो ये तो बढ़ेगा ना। ये देखो, इस जीरो को मैंने ऐसे लिख दिया, बट इस जीरो को तो मैंने इंक्रीज कर दिया 1 के साथ, राइट? सो Yes. वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस गाय, बट वी कैन रिमूव द दिस लीडिंग जीरो। दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ? Yeah. चलो अब एक एग्जांपल देते हैं। तो मेरा एक IP है DB8, सो 0 DB8 कैफे, ठीक है? 0 0 0, ठीक है? तो कितने हो गए? 8 ब्लॉक बन गए, 4 4 8, ठीक है, बन गया। अब इसको तुम कन्वर्ट करो तो कैसे कर सकते हो? 2001 लिख सकते हैं। अब 0 DB8 लीडिंग जीरो कौन सा है इसमें? यही जीरो। जीरो. जीरो जीरो तो है. इसको हटा सकते हैं, DB8 लिख सकते हैं। Yeah. वी कैन हैव अ कैफे। और नाउ ये 3 के 3 जीरो है, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2001 DB8 कैफे, देन वी हैव अ 0 0 1 0 11। लिख सकता हूँ ना? Yes, yes. वी But कैन still, it's वी very कैन रिमूव द tough. 0 0 0 कोलन कोलन, इसको मैं एक डबल कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, राइट? तो वी डिड इट, Yeah. राइट? ये जो लीडिंग जीरो Yeah. थे इसको मैंने हटा दिया, राइट? क्या मैंने इस जीरो को Yes. हटाया क्या? नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यूज होती है। क्या मैंने इस जीरो को हटाया क्या? नहीं, इसकी वैल्यूज होती है। सो वी कैन रिमूव द लीडिंग जीरो ओनली। हाँ, अगर मैं ऐसा IP एड्रेस डालूंगा भी ना राउटर पे, हाँ सर, तो इसको इसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, समझे? अगर मैं But डालूंगा still, भी ना ऐसा IP एड्रेस,
तो इसको इसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। या तो वो हमेशा जो तुम्हारा राउटर होता है ना, डिवाइसेस होते हैं, वो हमेशा उसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करता है हमेशा, सो दैट इंजीनियर कैन रीड इट एंड इंजीनियर कैन ट्रबल शूट इट। अब देखो, ओके नॉर्मली तुम क्या यूज टू, अब IPv4 एड्रेस में तुम क्या यूज करते हो? या तो तुम 172.16.1.1, लाइक नॉर्मली आई एम जस्ट डूइंग द प्रैक्टिस पर्पस, आई एम टेलिंग यू। सो 1.1 यूज करते हो, या तो 10.1.1। सो नॉर्मली वी डू यूज दिस काइंड ऑफ IP एड्रेस इन द ट्रेनिंग, राइट? या तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, IPv6 को मैं ऐसे लिख दूं, 2001 172.16.101 हो गया। बस एक्स्ट्रा क्या लगा, ये लगा, बाकी मेरे जीरोस हो गए ना भाई, बीच वाले। मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना, लेट मी डू दैट दिस वे। सो हो गया, डबल कॉलन, ये पूरा पूरा जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया। या इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको एक्सटेंडेड फॉर्मेट लिखूंगा तो कैसे लिख दूंगा? 2001 0172, राइट? अब या मेरे पास दो ब्लॉक है, ठीक है, तो दो ब्लॉक ऑलरेडी हो गए, चार ब्लॉक हो गए, तो चार बार जीरो लिखना पड़ेगा, राइट? एंड देन 0016 एंड देन 001, हो गए ना ये कुल मिला के इतने। ये चार जीरो किसको रिप्रेजेंट किया? इसको। डबल कॉल बाकी ये 16 था, यहाँ पे लीडिंग 000 होगा तो ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे 001 होगा तो ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे 172 था, ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया, खत्म कहानी। सो एक बार में चीजें क्लियर नहीं होगी, यू जस्ट नीड टू डू द प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। अंडरस्टूड? यस यस ना, यस यस अगर मैं एड्रेसिंग मैकेनिज्म की बात करूं, ठीक है, हमारे पास IPv4 में कौन कौन से एड्रेसिंग मैकेनिज्म थे? या तो तुम्हारे पास यूनिकास्ट था, ठीक है, या तो मल्टीकास्ट था, मल्टीकास्ट या तो तुम्हारे पास ब्रॉडकास्ट था, ब्रॉडकास्ट तुम्हारे पास एनीकास्ट भी था, अगर तुम्हें याद होगा। यानी यानी कास्ट भी था मल्टीकास्ट में एग्जैक्टली पढ़े थे हम लोग, याद है? यस 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 वी कैन असाइन या सेम आईपी अब मुझे एड्रेस बताओ या सेम IP, अब मुझे एक चीज बताओ कि तुम एनीकास्ट इसको समझना थोड़ा सा, क्या एनीकास्ट कोई सेपरेट IP एड्रेस है क्या? मतलब क्लास A, मतलब कोई क्लास नेक्स्ट क्लास है क्या, क्लास E या क्लास F या क्लास G? नहीं नहीं वो तो सेम आईपी था मतलब किसी भी क्लास के IP को तुम एनीकास्ट IP बना सकते हो, राइट? हाँ बिल्कुल राइट, क्लास A के IP को मैं एनीकास्ट बना सकता हूँ, क्लास, सो वी कैन नॉट डिफाइन दिस वन इज द एड्रेसिंग मैकेनिज्म। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट बिकॉज ये कंफ्यूजन होता है लोगों को, गॉट द पॉइंट? यस क्योंकि एनीकास्ट दे, वी डोंट हैव अ सच स्पेसिफिक रेंज फॉर द एनीकास्ट, वी कैन डू एनीथिंग, राइट? मैं यस अगर मैं एक राउटर के लूप बैक को, यहाँ पे एक राउटर के लूप बैक को, ठीक है, लूप बैक नंबर 1 इसको 10 और 1 बना दो, इस पे भी लूप बैक 1 को 10 और 1, हो गया मेरा एनीकास्ट, यस राइट? अगर मैं राउटर 1 है, यहाँ पे राउटर 2 है, तो यहाँ पे 172 का 16.1 और 1 एंड 172.16.1 और 2 1 और 1 बना दो, ये भी तो एनीकास्ट ही हो गया मेरा कुल मिला के। सो एनीकास्ट यस आई कैन टेक फ्रॉम द एनी ब्लॉक, राइट? नाउ अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं IPv6 की, तो IPv6 में क्या क्या है? यूनिकास्ट तो यूनिकास्ट हो गया, मल्टीकास्ट तो मल्टीकास्ट हो गया, वी डोंट हैव अ ब्रॉडकास्ट। सो नो ब्रॉडकास्ट नो ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पे वी हैव यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि IPv6 तुम्हारा फास्टर है, दिस इज द वन ऑफ द रीजन। अच्छा फ्लडिंग खत्म, so there's no flooding yeah देयर इज नो फ्लडिंग नाउ, वी डोंट हैव अ ब्रॉडकास्ट नाउ। रिमेंबर द अननोन okay यूनिकास्ट फ्लडिंग होता था, FFFF लग जाता था, ये वो yeah खत्म, switch पे देयर जब इज नो, वी डोंट हैव अ FFFF ओवर देयर नाउ। सो द ब्रॉडकास्ट को किसके साथ रिप्लेस किया गया? ब्रॉडकास्ट को रिप्लेस किया गया मल्टीकास्ट के साथ अगेन। So we have a multicast. Then again for the broadcast we do replace the multicast as well. And again for the anycast we do have a anycast as well. So basically अगर मैं मेजरली बात करूँ तो हमारे पास कितने टाइप्स के एड्रेस हो गए? हमारे पास कितने four टाइप्स के है एड्रेस हो गए? तीन, four एक, three है unicast multicast और दो anycast एंड तीन, तीन ही हुए ना? yeah We have a four types. We have a three types. Got the point? yes yes
ना अब मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे पास IPv4 के रिगार्डिंग। अगर मैं तुमको बोलूं कि यार आसद, मुझे ना वो मैंने अपने नया कंपनी सेटअप किया है और मुझे ना उसमें इंटरनल कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल ये मेरा स्विच है, ठीक है, और ये मेरे पीसीज है, ठीक है, तुम मुझे IPv4 के परस्पेक्टिव से बताना कि अगर मुझे पीसी से पीसी की कम्युनिकेशन करवानी है तो बेसिक नीड क्या पड़ेगी। बेसिकली स्विच स्विच पे कोई आईपी एड्रेस तो नहीं असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट विलन पे चल रहा है। हाँ, डिफॉल्ट तो और विलन पे चल गया, तो कंप्यूटर्स, 0/0, 0/1, 0/2 एंड 0/3, ये कौन से विलन के मेंबर के, विलन नंबर 1 के। सो देख, सो बाय हाँ, डिफॉल्ट स्विच के इंटरफेस ऑन भी होते हैं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। यस, स्विच पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीसी पे क्या करने की जरूरत है। आईपी एड्रेस असाइन करना तो तुमको पड़ेगा। आई वही एग्जैक्टली, तो 101, अगर तुम प्राइवेट कर लो या तो प्राइवेट पब्लिक करो, नो इशू, राइट। 13। Yeah. तो मेरा कहने का मतलब क्या हो रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कि तुमको आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, प्लस सबनेट मास्क भी कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। Yes, 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 and exactly. And if you want to provide the communication with the gateway, then you need to give the default gateway as Default well. get If you default want to provide the gateway. communication with the internet, then you have to provide the default gateway as well. But let's talk example of the LAN right now. So LAN में क्या हो रहा है कि तुमको एक पीसी पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, you need to configure the subnet mask as well, right? Yes. अगर मैं IPv6 के परस्पेक्टिव से बात करूँ ना, नथिंग। तुम अपनी पीसी को कनेक्ट किए स्विच के साथ, ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन, दिस विल गेट द ऑटो IPv6, इसको अपने आप IPv6 मिल जाएगा, इसको अपने आप IPv6 मिल जाएगा। आज की डेट में जितने भी तुम्हारे पास डिवाइसेस आ रहे हैं, जितने भी डिवाइसेस आज के डेट में आ रहे हैं, नॉट नाउ, इवन जितने भी डिवाइसेस 2000 ईस्वी के बाद से आए, 2003, 4, 5 के बाद से आए, वो सारे IPv6 इनेबल है। ये अभी भी IPv6 मेरा चल रहा है। हाँ, IPv6 सेटअप करते हैं। IPv6 इनेबल का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पीसी पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, IPv6 का एड्रेस मिल जाएगा। तो Yes. क्या एक यूजर को, मतलब मैं एक नॉर्मल यूजर की बात कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को, क्या उसको नेटवर्क इंजीनियर पे डिपेंडेंसी होने की जरूरत है क्या। नहीं, राइट। नहीं है अभी तो। Because they can communicate in the LAN network, right? So for the LAN network, Yes. what happened? Automatically user will get the IP address. So if you see my laptop right now, even CMD पे जाओ, ठीक है, और IP config/all मारो, Yeah, there is already an IPv6 there is already a IPv6 address, right? F80. Got the point? Yeah, yeah. हमारे पास IPv6 एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओनली द थिंग इज दैट योर राउटर, योर डिवाइसेस शुड इनेबल विद द IPv6, और योर पीसी एज वेल, योर एंड यूजर। Yes. So no need to involve the engineer for the communication for the LAN network. For the WAN you have to do that. This address is right. Automatically IP address is known as a link local addresses. ये जो एड्रेस तुमको पीसी पे एलोकेट होंगे ना अपने आप, उसको बोलते हैं लिंक लोकल एड्रेसेस। ये लिंक लोकल एड्रेसेस सिर्फ तुम्हारे लैन यूजर के लिए होता है, लैन कम्युनिकेशन के लिए। तुम इससे WAN में नहीं जा सकते हो। We could call this a private IP address if we compare that with IPv4. Not such that private. Private is a different thing in IPv6, but not such that private. So only प्राइवेट का मतलब, LAN communication. प्राइवेट का मतलब ये होता है ना कि भाई मैं यहाँ से यहाँ टनल के थ्रू राउट भी कर दूंगा। Uh, प्राइवेट का मतलब ये था, मान लो कि तुम्हारे पास एक नेटवर्क था 192.168.1.0/24 का काबुल में, और मैं दिल्ली में बैठा पड़ा हूँ, मेरे पास 2.0 का नेटवर्क था 190 का, तो अपन तो कम्युनिकेशन कर ही सकते हैं ना, GRE लगा के, GRE. Yeah. राइट। सो दिस लिंक लोकल एड्रेस इज लोकल टू द सेगमेंट। अच्छा। लोकल टू द सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि मान लो ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, और ये राउटर 3 है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरा यहाँ पे एक लिंक लोकल एड्रेस मिल गया, मेरा यहाँ पे एक लिंक लोकल एड्रेस मिल गया, यहाँ पे एक लिंक लोकल एड्रेस मिल गया, यहाँ पे एक लिंक लोकल एड्रेस मिल गया। तो मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट, तो वी हैव अ लिंक लोकल एड्रेस FE80
1. I'm just giving a random scenario. FE80 starting with FE80 2, FE80 3, FE80 again 2. तो तुम सब लोग कि यहाँ पे तो सेम हो गए, राइट? या तो ये जो तुम्हारा लिंक लोकल एड्रेस है ना, इससे तुम इसी सबनेट में ही बात कर सकते हो अपने एक सेगमेंट पे, यहां से यहां कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस बट एग्जैक्टली IPv4 में जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगी उससे तो कम्युनिकेशन कर ही सकते हो ना। सो डो नॉट कंपेयर विद, हाँ यू कैन सी दैट दिस इज द लोकली टू द segment side, not beyond the segment. अच्छा So two types of addresses till now we have done. So one is called as a unicast address, right? Right. अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गया था, कहाँ पे, unicast, multicast, anycast, and link local address. So anyway, not a big deal because this under the unicast we have a link local address types. So majorly we have only the 3 types: unicast, multicast, and linkcast. Under the unicast we have a further link local address, right? Under the unicast we have a global unicast address that we'll discuss. Don't worry about that. So let me show you how you can configure the basic IP port on our router side. Where's Javed and Nasir? सर पता नहीं अब सबको उठाना पड़ता है ये क्लास जब सुबह होता है और कोई उठता नहीं है दे आर स्लीपिंग I told them that we have to be regular because I cannot wait anymore क्लास को अभी कुछ और मतलब जो टॉपिक बचे उसको हमें खत्म करना पड़ेगा but they're saying that we have video recording so I'll put the space over here because ipv6 plus lambda and put the space. Right. तो एक काम करें इसको, let me start this devices. I'll give the IP address because I'm thinking right now. So your, let me start tell you about this one. Your global unicast address, right? That will be a start from the 2001, or you can start with the 3001 as well, right? That's a starting bit. Your link local address always start with the FE80. That's a starting point. So मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक इंटरफेस पे I'll give the IP 2001 cafe db8, right? And then I'll call those guys 000 000 000 then 00. सर लिंक लोकल आईपी एड्रेस तो इस पे होगा ना अभी आपने, I'll ऑटोमेटिकली show you that. Once I configure enable the IPv6, automatically they will get that. I'll show you that. I'm just writing the द IPv6 ग्लोबल वन over there right now so that you can understand the things. Zero, table of 1 2 3 4 5 6 7 then 12 12, right? Perfect. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 has to be 12 12, and then the IP part will be 1/64. So 128 बिट में से क्या होगा तुम्हारा, ये जो पूरा एरिया 64 बिट तुम किसको असाइन करोगे? 64 बिट विल बी योर prefix network ID, right? And 64 bit will be your
mask ID, your mask, your net. This is the network portion you have, and you have a host portion. You can see that. So that's a 64-bit. I just took it, and the same thing. So I don't have a space, so I'll just put this guys a downside a little bit, and then down we have a. So till this point, we have a network portion. Till this point, we have a host portion. So किस bit में हम IP change करेंगे? So I say the 12.2 over there, right? Okay. Yes. Same thing. What I can do that this side, it should be 23 and 23, right? And this is the router 2. We have a 2, and we'll give this guys a 23 and 3. This clear now? Yes, yes. Chalo. So first of Sir, all, ये slash 64 host का मतलब portion, मुझे host portion. हमने इसको 64 को host किया. like by default आपने इसका तो आपने कहा कि 64-bit is related to the host portion and 64-bit is It's related to the network portion. network So portion. Yeah. this portion, it's not gonna change, right? That's our network portion, right? It should be not change. Host portion में तुम Okay. इतने range के तुम्हारे पास IP addresses है. Okay. That's why it's not. So we cannot do the subnetting. We can do that, but not recommendation like that, because we have enough IP. To children. So if you see the first of all, your IPv6 is disabled. So what you can do that you need to first enable the IPv6 routing. Like this way, this command is gonna enable the IPv4 routing on the router side, right? Which is by default enabled, but by default IPv6 is disabled. So you need to enable the IPv6 by using this command IPv6 unicast. This is the first command that you need to enable it. Now what I can do that, I'll just go under the interface 0/0. I show the no shut, right? Show IPv6 interface brief, right? My interface is up. Let me give the addresses for this guy. If you see one thing, do so IP interface 0/0, right? Go interface IPv6. So IPv6 interface. Yeah. So let me show you that how you can configure it. So once I'm going to enable the command IPv6 enable over there, but this command is going to do that. This command will take the linked local address. So IPv6 interface brief right now. You can see that I do have a linked local now. So nothing I have done, right? I just enabled the IPv6 enable over there, this command, right? The first command I did the IPv6 unicast routing. So this command is gonna enable the unicast routing on the router side for the IPv6, right? It's not gonna enable the multicast behavior for the IPv6, it's just gonna enable the unicast behavior. Second thing, what I did, I just went to the interface and I just turn on the interface, right? I see the interface 0/0, no shut, and I just say the IPv6 enable. So once I say the IPv6 enable, what this command is going to do that,
this command is immediately get the link local address. And how this link local address will be calculated, don't worry about that, we'll discuss this thing. But if you see that we do have a link local address now. So FE80, we do have it. So no manual intervention. Same thing if I go to the router number 2 right now. On the router number 2, what I can do that? I'm just gonna interface 0/0, no shut, IPv6 enable. Right? IPv6 unicast routing. Do show IP interface, do show IPv6 interface brief. I do have this guy as well. So between the router number 1 and router number 2, I haven't configured this address. Again, I'm repeating, I haven't configured this address on the router number 2. Right? This is my link local address. I haven't configured it. Same thing if you check. Sir, can you ping this IP address? I'm doing that. Hold on. So if you see that on the router number 1 as well, I haven't do that anything. I just enable the IPv6, and after what happened, automatically this PC, so this router will get the IP addresses. Now, these things, if you see that, if I'm gonna ping from router 1 to the router 2, right? I don't have any global address, but still I can send the traffic. So for example, as the FE80, right? So there is no issue with the case sensitive over there. If you see that we have a double colon over there, right? That's going to represent as a consecutive 0, C802, right? And then we have a 2EFF, and then we have a FEBC, colon 0. And if you put the enter over there, what he will do that, he will ask you, hey, could you please help me out what interface I should use to send the traffic, right? You cannot send the traffic to the link local address without specifying the interface on the router side. It's not selecting the exit interface by default. Yeah, we need to select it by default. Remember that in the unicasting, what happened by default, the source will be the 0/0, right? For this kind of direction, right? By default. Yeah, By default, you don't need to specify the source over there, but you need to specify the source in the link local address, because the link local address is local to the segment. क्योंकि अगर मुझे मान लो कि यहाँ पे टेक एग्जांपल ऑफ दिस साइड, अगर मैं यहाँ से पिंग करता, ठीक है, मैं बोलता पिंग दिस गाय, तो मुझे बताना पड़ता ना कि भाई इस इंटरफेस से पैकेट को लेके जाओ, ना कि इस इंटरफेस से, बिकॉज ये जो लिंक लोकल एड्रेस है ये इस सब सेगमेंट के लिए और ये इस सेगमेंट के लिए. So we need to specify the output interface and say that 0/0 now. And तुमको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा interface name. So it's saying that it's wrong. So fast Ethernet ETHERNET 0/0. It's working. Right? Good. जब तुम लिंक लोकल एड्रेस से पैकेट भेजोगे तो तुमको रिप्लाई भी कहाँ से मिलेगा? Link local से ही मिलेगा. So if you're going to capture this link, and if I'm going to send the packet again, sorry. Done. And just send the packet. So I send the equal request with the link local address. I will get the reply from the, so FE80C801. I said with the link local address. This is the MAC address we have. And if you see the ether type value, we have a 86DD. That is changed from the 0x0800, right? For the IPv4. So now we have a change from here, right? And the reply, if you see that, reply also we will receive from the link local address as well. So there is a multiple use case of link local address. Don't worry about that. We'll see that. So one of the use case of the link local address is what? You can use this address to provide the internal communication, right? Now let's keep the same thing. If you see that on the router number 2 as well, if I'm going to enable the interface, okay. Now the next part, let me give the IPv6 global unicast address on this particular interface. How you can give it? You can go under the interface, the IPv6 address. This is the command, like normally how you can assign the IPv4. You just put the command IP addresses, right? So based on the IP addresses command, you can define the IPv4 addresses. For the IPv6 address, what you can do that you just need to tell the, hey, IPv6 address, let's send this as the 2001 cafe 0db8
and 0, 0, 0, 0, 0, 0. Then we have 0, 0, 0. Then we have 12, 12, 12, 1, 64. No shut. अब देखो do show ipv6 interface belief आ गया. मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया इसको समझना. मैंने क्या इतना लंबा कॉन्फ़िगर. व्हाट्स इसको डेट. इट्स कन्वर्ट इनटू द शॉर्टर फॉर्मेट. सो लीडिंग जीरो हट गया, ये वाला जीरो हट गया. Right, this Yeah. 3 0 has changed with what? Double colon and 12, 12, 12, 1. Got it? Yes. So अगर तुम लंबा भी कन्फिगर करोगे ना राउटर पे जाके तो तुमको अपने आप शॉर्टर में कन्वर्ट कर देगा. दिस इज क्लियर ना. Yes, absolutely. Now same thing, I'll just copy it because it's long one, so I'll just copy it on for the interface R2. I'll say the 12 R2 for the 2. Now you can see the do show ipv6 interface brief. Right now I do have this thing. So अगर मैं अब राउटर 1 पे जाऊं और यहाँ से पिंग करूं for the global unicast address, right? It's working. तो मुझे Okay. global unicast को पिंग करने के लिए we don't need to specify the interface. Now if you see that one another thing, कि जब तुम global unicast को पिंग करोगे ना, you can see the echo request, right? Which is coming from the 12.1. That's my router number 1. Going to the 12.2. That's my router number 2, right? So he's sending the packet to this guy. So मुझे reply भी कैसे मिलेगा? Reply भी मुझे global unicast से ही मिलेगा. Clear हो गया? Yes. R2 is given, so this is the R2, right? 12.2 is giving the reply to the 12.1. Yeah. So The reply package. exactly. So what I'm trying to say that over here, key, if you send the request packet from link local address by using link local address, because this is the interview question is coming, then you will get the reply from link local address. If you send the packet by using global unicast address, then you will get the reply from global unicast. This point is clear. Yes. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अभी मुझे ये बताओ कि राउटर के इस इंटरफेस अप है और यहाँ पे एक इंटरफेस पे मल्टीपल आईपीस कॉन्फ़िगर है, राइट? आई हैव अ 2 आईपीस कॉन्फ़िगर, वन फॉर द लिंक लोकल एड्रेस, वन फॉर द global Global. unicast, right? Now let's configure the 1/0, this one. So what I can do that interface 1/0, ठीक है? To get the IP link local address on this particular interface, what command do we need to use? ipv6 enable. Enable, right? I'm not going to use this command now. ipv6 address as the 2001 cafe. अब देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ 0 I'll say the dv8, ठीक है, डबल कोलन. I can write, right? 23 Yeah. 23 2/64. Did I give it this one? Hmm. Two swipe message interface brief. That's right.
Yeah, it's working. When it brings down, why it's down? This one's less. Saying it's in use. Oh, same subnet I have used the 64 and 64. Same lobby. Wait, I need to change this guy. 1 minute. Let me change this to the I'll make a default. So ipv6 because we don't have it. Replacements last year. ipv6 address 2001 cafe. db8 dbcd 003323 Now you can see it. अभी ध्यान से देखना मेरे दोनों इंटरफेस का मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ डू शो रन इंटरफेस 0/0 show run interface 0/2 if you see the configuration difference over here मैंने यहाँ पे ipv6 enable किया by using this command what happened interface get the link local address right है ना Yes. क्या मैंने यहाँ पे लिंक ipv6 enable किया गया No. मैंने यहाँ पे ipv6 enable नहीं किया just put the ipv6 address but if you see the do show ipv6 interface brief मुझे क्या मिल गया Link local. So it may act as a global one. yeah We so save command. what I'm saying that if you assign the global unicast address automatically interface take the link global address. Clear okay? Yes, yes. Absolutely. How to enable link local address on the interface? Simple command. You just need to go under the interface 0/0 ipv6 enable. Right? Same way, Yes. let's do the router 3 as well. Okay. And router 3 पे मैं क्या करता हूँ? I'll do the ipv6. The ipv6 address will be 2001 cafe 0db8 abcd 2323 double colon that's going to represent the number consecutive 0/64 all done. So if you're going to ping to the 2 I would be able to do that. तो मेरा यहाँ से यहाँ का कम्युनिकेशन हो गया मतलब I can ping from here to here, I can ping from here to here, I can ping from here to here, and I can ping from here to here. There is no issue because we will have a proper configuration of the ipv6 IP addresses, right? What I can do the tomorrow, Yes. we'll do the tomorrow the static routing for this one, and And one dynamic as well. yeah, GIP on as well. Okay. Okay. Good, sir. But It was interesting. It was interesting. Sir, if we could start the class a little bit earlier, I know the guys are not joining, so why should we wait? I can start, and that's not a very big deal for me. Like Okay, I do the wake up at the 6 o'clock morning. I can do that. You can do that. Can we make it like early as possible? Yeah. You tell me your time. So that Okay, I'll just talk to them if they are not joining. So then I don't need to yeah. So wait for them. if they are not joining, they are watching the video. That's fine.
So you can do that. Yeah. And Yeah. your automation will be start from maybe the next week, right? Or maybe Okay. after the IP. As soon as we are done with the topics that are left, so Yeah. we will start that one. Sir, एक question था ये SD SD access. Okay. ये इसके बारे में थोड़ा आपको SDA, yeah, Yeah. that come under DNA. So it's the same like SD1, but Same that's like for the LAN. it seemed like SD. I have explained this thing. I seem like SD-WAN, that's for the WAN, and the SDA for the LAN plus wireless. Okay. So like यही जो STP हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं और STP, MSTP, ये HRSP, ये सब अब हम इस पोर्टल से भी कॉन्फ़िगर Right, करेंगे DNA ना, center से तुम करोगे. So everything डीएनए is सेंटर managed से. from a DNA center. So DNA is a So controller. It's a controller. अच्छा, that's a control. So are you teaching और ये lab अभी possible नहीं है, एक बार तो आप No, ऐसे कह रहे थे. we are gonna learn this thing, man. I tell that we have done? No, we are gonna learn this thing. Okay. Okay, that was, So I'll tell you the plan. So once we have done with the IPv6, we'll go with the your BGP regular screen. That will not take the much time. Okay, and then I'll go with the AAA. Okay. उसके बाद your AAA is not that much important. It's yeah, I just we're know, but gonna go. we'll go through the that's not a big deal. Okay. So Yeah. triple will go through the AAA, we'll go through the BGP regular screen, we'll done the IPv6. Then I think so your wireless few part things and the automation. So that will be covered by the Puneet, and DNA center maybe will take the batch, or maybe the Puneet will take the batch, anyone. So No, it's depending on who is even available. wireless, I don't care about it. Okay, wireless, we could do that So even wireless by is a myself. very small part. It's just a 1 to 2% of the wireless that comes in the DNA only. So जब तुमको DNA पढ़ाया Okay. जाएगा ना, so maybe I or maybe the Puneet anyone can teach you the wireless as well. Like AP क्या होता है? सर इसका मतलब ये SDA SD like का लैब तुम नहीं कर सकते. You cannot do the SDA lab. DNA तो the यही reason लैब का मैं आपसे बोल रहा था ना, ये लैब कौन करवा सकता है ये इसका. लैब अभी तुम you can access our tracks with the lab क्योंकि nobody has the physical one. We bought the physical. I'll show you the मैं दिखाता हूँ तुमको. एक मिनट रुको. Be on it. मैंने एक ट्रेनिंग है. That's just give me one time. Just back 1 minute. ओके. That's my minute. Let me pause the recording. Okay.